Now, this lecture is totally on the money. For class 1 students, we should tell them what is the need of the money. I am going to discuss in this lecture money. Now, first, I will define what is the money. Money. It is required. It is required to buy buy or purchase some items from market. They are small kids. So you have to explain item means chocolate. Suppose they want to buy the chocolate from the market, they need money. Now question is, for the money, what type of the unit they to use? So first I will tell you unit. They know the unit, but we should mention in black and white. The unit of money is rupees. They know rupees. But symbol of rupees is, they should write raw and cross this. Symbol of rupees is this. And paisa. For that, small p is written. Here also, you have to tell the students, nowadays, in maximum states, paisa is not used. The minimum rupees starts from 1 rupees, 2 rupees, and it goes up to 10 rupees in a coin. So I am writing there are two type of the money. Two type of money. What is that two type? A, coin. अब जरा ध्यान से सुनिएगा. अब to describe coin, you have to mention it is in circular shape. In circular shape. I have already mentioned that the circular shape is like this. And made from solid material. They may not understand solid material, so it's a stainless steel or iron
or any solid material. Then the second money, B, is referred as note. It is in a rectangular shape. अब यहाँ पर रेक्टेंगुलर शेप बना सकते हैं आप, जो है आप ब्रैकेट करके ऐसे करके रेक्टेंगुलर शेप, एंड मेड फ्रॉम पेपर. I have already said symbol of rupees and symbol of paisa. Now, for convenient, I am showing the coin of rupees 1, 2, 5 and 10 as follows. And ask the students, they should ask their parents to show them on the both sides. Just see. This is the 1 rupees coin. Then this is 2 rupees coin. Just see. Then it is 5 rupees coin. And then it is 10 rupees coin. Just see, all the coins are circular. So in my lecture, I will make like that. Shape of the circle may be slightly varies from lower to higher side. So you can say this is rupees 1. Then this is rupees 2. Then rupees 5. Then rupees 10. So this is a coin of different shape. Shape circular है, different size you can say, better way. Different size. Now question is the notes, and in the notes I will just show you because they are class 1 students. So for them you have to show that this is the rupees 10. Just see it is a rectangular because this length is different than this one. This is 10 rupees. Rupees 10 has been written. Then also it is 20 rupees, again rectangular shape made of paper. Then again it is 50 rupees, again rectangular, also made by paper. Now this is 100 rupees, again rectangular, it is made from paper. Again 200 rupees, rectangular shape made from the paper. And also this is 500 rupees made from paper and also in the rectangular shape. These things, at least teacher should ask the students to show from book or from ask their parents
to show them these coins and notes. So now similarly I will make here a rectangular shape of rupees. I will start from the 10, और there is also possibility कि 5 rupees का नोट भी आप मिलेगा आपको जो है, which I don't have, otherwise I will show you. This is 5 rupees, 10 rupees, then 20, rectangular shape, then 50 I have shown, then 100, then 200, then 500. There was 1000 note as well as 2000, but nowadays it is not available in the market. And this coin and this rupees note of different size and value. Why it is important for class 1 students? Because this is not going to vary much in the future, at least in our life, other children's life, unless there is a big announcement by the government. Now, another statement I am going to make, that note, this is the note I am just putting it. This note and this note is different. That nowadays there is no paisa coin there is no paisa coin in the market. I have heard that some state in Calcutta paisas are available. And before that, when we were child, so 1 rupees was referred as 16 आना. ज़्यादा सुनेगा जो है. And 1 आना was equal to 4 paisa. So there is a coin of 1 paisa, ring type and circular type, made of copper. But now I am not going to discuss, because this is not discussed anywhere in a textbook. Further, in a textbook, only paisa can be discussed, right? So I am going to say something about relation between rupees and paisa, which a student should be told. First, just see, rupees 1 is equal to 100 paisa. Now in paisa there is a 50 paisa coin. So if you add 250 paisa, which will be equal to 100. Now again there are 25 paisa coin. So if you add 25 plus 25
plus 25 plus 25. Then it will be equal to 100 paisa. Why I am making circle? Because all this paisa was in a circular shape. Now again, there was 10 paisa coin. So you can say that 10 plus 10, 10 times. 10 10 ja 100. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 is equal to 100 पैसा. और इसको भी आप जो सर्किल में कर सकते हैं. और नाउ ऑल दीज आर पैसा. Why I have written? Because only question can be asked in terms of paisa, not available in the market. So you should know how India has progressed. At the later stage, you realize the meaning of paisa, coin and other things. अब देखिए, अब कॉइन जो है, जैसे इस तरह मैंने यहां लिखा है, एक इसका भी बना सकते हैं. यहां पर जो है पैसे का, देखिए 10 पैसे का आपका जो है अवेलेबल है. अब इसको आप पी यहां कर दीजिए, चाहे ऊपर कर दीजिए, चाहे नीचे कर दीजिए. फिर 25 का है पैसा, सब कॉइन है. और फिर 50 का. Generally, coin is in a circular shape. You have to keep in the mind. And note is in a rectangular shape. So that is all these numbers and the definitions where question is based on this. So I am giving you some examples and you have to answer. Because addition of the two digits, I have already told how to do it, whether a number line, horizontal, vertical, straight line method, forward method, all these things. I have already, so I'll just deleting this one. Till now, the student should become master as far as addition is concerned, sum is concerned, by any method. So I will give the example one. One. What is example one? Write the total value in rupees of the following coin of the following coin. अब coin means already circular shape, ये ध्यान रखिएगा. And notes मतलब आपका ये रेक्टेंगुलर शेप में होगा. Whole life you have to remember these things.
because it is the first standard class students. So second, up to your whole life, this symbol is going to be used. Coin is made from solid and the note is made from the copper in a rectangular shape. अब क्वेश्चन जरा नोट करिए, देखिएगा जो है ए, $50 पैसा प्लस 25 पैसा प्लस 25 paisa. By adding this paisa, you have to tell in terms of rupees. और इसको मैं ब्रैकेट में बड़ा कर देता हूं जिससे लिखने में आपको दिक्कत नहीं होगा. हिंट में दे रहा हूं. Now you should know to add 50 in 25 plus further 25 or 25, 25, 50, then you can add it. So it will be paisa and you have to convert it to rupees because 1 rupees is equal to 100 paisa. Just B question. Paisa you can also write in the bracket, circle, there is no problem. 25 paisa plus 25 paisa plus 10 plus 10 plus 10 plus 10 and you have to answer in terms of rupees. अब देखिए सी, रुपीस 10 नोट है, ये कॉइन नहीं है, दिस इज नोट, प्लस रुपीस 20 प्लस रुपीस 30 प्लस रुपीस 10. अब इसकी वैल्यू कितना रुपया होगा आपको यहां पर लिखना होगा. Similarly, D rupees 50 plus 10 plus 5. अब इसको आप रुपीज में लिखिए. अब इसमें आप क्या कर सकते हैं, आप ये भी कर सकते हैं, प्लस आप सर्किल बना करके आप रुपीज 5 भी कर सकते हैं. इसका मतलब कॉइन ये हुआ, ई रुपीज 10, ये सर्किल है, कॉइन है, प्लस ये पेपर है रुपीज 10, देन रुपीज 5. अब आप बता सकते हैं कि यहां पर रुपीज कितना होगा. अब एफ
एफ ये आपका जो है अगेन रेक्टेंगल 10 प्लस ₹10 plus circle. Now here you have to make a point whether rupees in a coin are the same amount or the rupees in the rectangular shape value will remain the same. For example, rectangular shape 10 rupees and 5 rupees. और अगर यहाँ पर आप फिर सर्कुलर लिखते हैं कॉइन का जो है ₹10, so value of 10 rupees and 10 rupees going to be the same. ये आपको ध्यान में रखना होगा. ये आपका एग्जाम्पल, ये वो है आपका जो क्या कहते हैं ये 1 है, और मैं एग्जाम्पल 2 दे रहा हूं, जरा इसको ध्यान से देखिएगा. जो है एग्जाम्पल 2, इसमें क्या मैच बिटवीन कॉइन एंड नोट्स. मैच बिटवीन कॉइन एंड नोट्स. अब ये क्या है, इसको मैं लिखता हूं कॉलम 1. कॉलम का मतलब वर्टिकल होता है, और इसको मैं लिखता हूं कॉलम 2. अब देखिए, अब पहला क्वेश्चन है, मैं 50 पैसा प्लस 50 पैसा. अब आपको यू हैव टू एड एंड टेल व्हाट इज द पैसा, हाउ मच पैसा इज देयर. देन सेकेंड ₹10 कॉइन है, और ये भी प्लस, और ये भी ₹10 कॉइन है, और ये कितना होगा. फिर देखिए थर्ड, ये ₹20 है प्लस फिर ₹20 है, और फिर ₹10 है. ये सब कॉलम 1 में कॉइन है, ये देख लीजिएगा COIN कॉइन, और कॉलम 2 में जो है नोट्स है. और फोर्थ है 50 कॉइन एंड फिर ₹50 कॉइन. इसको बताना. फिर आपका जो फिफ्थ जो है, जरा ध्यान लिखिएगा, ये 10 पैसा प्लस 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 10 पैसा. अब ये किसके बराबर होगा? You know the table of 10? 10 1 is 10, 10 2 is 20, 10 3 is 30, 10 4 is 40, and so on.
So you have to write here in terms of coin. अब देखिए, अब हमने यहाँ पर जो है नोट्स के फॉर्म में दिए हैं, आप ध्यान रख लीजिएगा। ये है ₹1, ये नोट है, मान लीजिए ₹1 का नोट है। सेकेंड हमने दिया है ₹100। एक मैच करके दिखाऊंगा। फिर यहां पर दिया है अगेन ₹1। फिर हमने दिया है ₹20। और फिर यहां पर हमने दिया है ₹50। मैच क्या करना है कि हम जस्ट एक एग्जांपल बता रहा हूं कि आपका जो है, सपोज कर लीजिए कि इसका सम जो है 100 पैसा आता है, और 100 पैसा जो है ₹1 के बराबर होता है, तो आप कह सकते हैं कि ये आपका इससे मैच कर रहा है। सिमिलरली 20 है, तो देखें कि ₹20 कहाँ है, यहाँ पर उसको मिलाइए। फिर यहाँ देख रहे हैं 50 है, तो 50 कहाँ पर, यहाँ पर मिलाइए। फिर देखिए 100 है, तो 100 कहाँ पर, उसको मिलाइए। फिर ये देखिए 100 है, तो 100 को मिलाइए। देखिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। सो यू हैव टू मैच दिस थिंग वेरी इजीली। अब एग्जाम्पल 3 में लिख रहा हूं, जो बहुत छोटा है। मोनो, ये प्रॉब्लम इन वर्ड्स है। परचेज a box of toffee of ₹100. Is 150. Question is express ₹150 in coin and notes. अब now it is up to you. हिंट मैं दे रहा हूं, हिंट आई एम गिविंग यू। ₹150 आप ऐसे लिख लीजिए। अब देखिए ये रुपीस नोट में क्या होगा, फिर देखिए, फिर प्लस रुपीस कॉइन में कितना होगा, ये हिंट है। अब आपको देखना है, अब यहां पर सबसे बड़ा नोट क्या है, मैं आपको दिखा दिया हूं। 150 है कि नहीं है, तो 150 के नीचे कर दीजिए। फिर यहाँ पर कॉइन देखिए, जब जो रिमेनिंग बनता है वो कॉइन कैसे कैसे इसमें जोड़ा जा सकता है। तो यही आपका एग्जाम्पल 3 है, और यही हमारा जो है इस लेक्चर का एंड है। थैंक यू वेरी मच, एंड यू कैन मेक, टीचर कैन मेक मेनी एग्जाम्पल्स लाइक दैट। थैंक यू वेरी मच।